गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट मु सोनाली स्वागत करुच्ची मो चैनल बायोलॉजी सोनाली रे। तो आमे जेमिति बीएससी फोर्थ सेमिस्टर रो कोर पेपर 8 रो आमे देखुथिले जोटा सेकेंड यूनिट रेस्पिरेटरी सिस्टम रो आमे कंपैरेटिव एनाटॉमी विषय स्टडी करुथिले। तो प्रीवियस क्लास रे मु रेप्टिलियन आउ एम्फीबियन रो लंग्स विषय कहिथिली। आज आमे एवियन आउ मामल्स रो लंग्स विषय आमे स्टडी करिबा। ता सहित आमे एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन विषय मध्ये देखिबा। तो देख क्लास स्टार्ट करबा पूर्व समस्त अनुरोध अच्छी मो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो पसंद थिले लाइक एवं शेयर करिवो। आ जो माने भी आज मो क्लास रे नुआ अछ मो तांको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देबी से माने जे कि प्रीवियस क्लास देखि परिबे एवं अधिक जो क्लास पई से माने मो टेलीग्राम चैनल मध्ये जॉइन हे परिबे। तो देखो एवियन लंग्स विषय में देखिबा। तो बेसिकली होची देखो जो एवियन लंग्स अच्छी मॉडिफाइड फ्रॉम द डोज ऑफ रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स रू बेसिकली एवियन लंग्सटा केमती मॉडिफाइड होची ता विषय जानिबा। तो बर्ड्स बाय कॉन्ट्रास्ट बर्ड्स हैव लंग्स एंड एयर सैक व्हिच हैव ओनली ए वन वे फ्लो ऑफ एयर। दिस अलाउ देम टू हैव कॉन्टैक्ट विथ द फ्रेश एयर। तो बेसिकली से को फ्रेश एयर को पाइबा पाई बा ग्रहण करिबा पाई तांकर वन वे फ्लो ऑफ एयर टाइप रो तांकर रेस्पिरेटरी बा सिस्टम बा तांकर एयर से थाए। ठीक अछि। दिस अडाप्टेशन एनेबल देम टू फ्लाई एट हाई अल्टीट्यूड जो पई तांको हाई अल्टीट्यूड से माने उड़ीबा पई तांको सहाय्य करे। कहीं ना जानी जिते हाई अल्टीट्यूड हम से ऑक्सीजन कौन हम ऑक्सीजन लेवल से कम हो जाए। तो तेणु तांको यही प्रकार सिस्टम द्वारा से हाई अल्टीट्यूड रे उड़ी पारती वेयर देर इज लेस ऑक्सीजन जो जगह कि लेस ऑक्सीजन थाए है। एयर सैक जोटा डायवर्टिकुला ऑफ लंग एक्सटेंसिवली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट मोस्ट ऑफ द बॉडी। फंक्शनली these 9 air sacs can be divided into anterior sac जोटा इंटर जोटा आम कहूँ क्लाविकुलर सर्विकल किंबा एंटेरियर थोरासिक है। तो 9टा एयर सेक तांकर थाए जोटा डिवाइड होइचे एंटेरियर सेक हिसाब रे एवं पोस्टीरियर सेक हिसाब रे केमती डिस्ट्रीब्यूट होइचे पोस्टीरियर थोरासिक किंबा एब्डोमिनल हिसाब रे सेटा डिस्ट्रीब्यूट होइचे है। तब देखो जदि एयर सेक देखिबा हैव वेरी थिन वॉल एमानकर बहुत थिन वॉल थाए with few blood vessel। कहीं ना थिन वॉल तांकर थाए आमे जानिछु तांकर जेहेतु से माने उड़ीबा पई अडाप्टेशन फ्लाइट अडाप्टेशन मोड रे थाए से मानकर। तो तांकर सेही प्रकार एयर सेक्टर मध्ये सेही प्रकार डेवलप होइथे बा अडाप्टेशन होइथे जोटा कि तांको हाई अल्टीट्यूड रे उड़ीबा को सहाय्य करे ता सहित से माने ऑक्सीजन मध्ये ग्रहण करि पारिबे जेंती हैला। सो दे डू नॉट प्ले ए डायरेक्ट रोल इन गैस एक्सचेंज जेहेतु तांकर थिन वॉल थाए से माने डायरेक्ट एयर को समाने गैसियस एक्सचेंज को समाने डायरेक्ट ग्रहण करि पारंती नाही। रेदर दे एक्ट एज द बिलो टू वेंटिलेट द लंग्स है। तो अरेंजमेंट ऑफ द एयर डक्ट इन द लंग्स देयर इज नो पासवेज वे इन द डेड एंड। तापर जदि नेक्स्ट देखिबा हमें एयर फ्लो थ्रू लंग्स जोटा पारा ब्रोंकाई इज यूनिडायरेक्शनल गोटे वन वे सेटा गोटे डायरेक्शनल ही तांकर एयरटा फ्लो करता है लंग्स रे है। पारा ब्रोंचियल लंग्स ऑफ बर्ड्स आर सब डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल एल्वेओली और एयर कैपिलरीज है। द एवियन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज पार्टीशन heterogeneously है। So the function of the ventilation of the gas exchange are separate in the air sac and parabronchial lungs respectively। तो बेसिकली तांकर कौन है तांकर जो फंक्शन अच्छी वेंटिलेशन ऑफ गैस एक्सचेंज पाई बेसिकली वेंटिलेशन पाई पाराब्रांकियल लंग्स अच्छी सॉरी तांकर एयर सेक अच्छी जो जगह कि गैसियस एक्सचेंज पाई तांकर जोटा पाराब्रांकियल लंग्स अच्छी। तो यही प्रकार तांकर डिवाइड होइची तांकर जोटा वर्क जो तांकर कामटा को से यही प्रकार डिवाइड करचंती। तब देखो एयर सेक एक्ट एज द बिलो वेंटिलेट द ट्यूब लाइक पाराब्रोंकाई just like mammals birds have rib although they lack of diaphragm to seal the thoracic cavity। The thoracic and the abdominal cavity are thus not separated and this single large body cavity is known as coelom है।
तापर देखो द लंग ऑफ द बर्ड्स आर कनेक्टेड टू द वॉल ऑफ द सीलम बाय कनेक्टिव टिश्यू एंड आर अनेबल टू एनलार्ज देमसेल्फ लाइक मामालियन लंग। तो देखो ये बहुत सिंपल अच्छे तेणु मुझे तुमको बेसी एक्सप्लेन किसी करूना है जोड़ा बर्ड्स लंग्स अच्छे से बर्ड्स लंगटा कौन है कनेक्ट है सीलम वाल सहित आउ थ्रो क्या द्वारा जोटा कनेक्टिव टिश्यू द्वारा है जी कि से अनेबल करे कौन लार्ज एनलार्ज करने लंग्स एनलार्जमेंट अनेबल करता है जमती कि मामालियन लंगटा कौन एनलार्ज अच्छी ना से प्रकार न थाए है इंस्टेड एयर इज मूव इन एंड आउट ऑफ द बर्ड्स by the expanding of the coelom. This enlarged air sac connected to the coelom causing air to pass through the lungs and into the air sac. तापर देखिबा नेक्स्ट ए कंप्लीट एवियन रेस्पिरेटरी साइकिल इन्वॉल्व टू इंस्पिरेशन एंड टू एक्सपिरेशन है तो केमती whereas mammalian have lungs in which it inspiration and then exhaled you can think the birds have three set of lungs है they have anterior जमती देखो एंटेरियर जोड़ा हूँ आम क्रानियल एयर सेक कहीपर एवं पोस्टेरियर जोड़ा कोडाल एयर सेक एंड द लंग डेंगसेल तो यही प्रकार तीन टा भाग में विभक्त है गोटे हूँ एयर सेक गोटे हूँ तुम जोड़ा क्रानियल पार्ट अच्छी गोटे हूँ तुम कोडाल पार्ट हूँ एयर सेक अच्छी पोस्टेरियर पार्ट रे आ गोटे हूँ लंग्स है तो एयर इज शिफ्टेड अराउंड दीज थ्री सेट ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन द एग्जैक्ट मेकानिज्म इज बिलो तो कौ प्रकार मेकानिज्म थाए ता विषय में एक्सप्लेन करवा है ड्यूरिंग द फास्ट इंस्पिरेशन ऑफ द एयर स्ट्रिंग इज डिवाइडेड इनटू टू आज ट्राचिया डिवाइड तो दुईटा ट्राचिया डिवाइड होती तो एमान को जो इंस्पिरेशन बा जोटा माने ग्रहण करते एयरटा से मतलब दुई भाग दुई ट्राचिया को दुई भाग विभक्त हो जाए था तो दुई आड़ को से एयरटा पास करे है द एयर डज नॉट गो डायरेक्टली टू द लंग but instead travel to the caudal air sac. A small amount of the air will pass through the caudal air sac to the lungs. During the fast expiration, the air is moved from the posterior air sac into the lung. The blood capillaries flow through the lungs, and this is where the oxygen and carbon dioxide are the exchange. आउ यही जगह कौन होता है तांकर जो ब्लड कैपिलारीज अच्छी ना लंग्स पाखे ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भितर कौन होता है तांकर एक्सचेंज होता है तापर जब नेक्स्ट देखा व्हेन द एयर इंस्पायर्ड द सेकेंड टाइम द एयर मूव टू द क्रानियल एयर सेक तापर सेकेंड टाइम रे कोठू आसला क्रानियल एयर सेक को आसला जो जगह कौन हम सेठी से एक्सचेंज होता है ऑन द सेकेंड एक्सपिरेशन the air moved out the cranial air sac into the trachea and out of the nostril है तो ये प्रकार एमनकर टोटाल मेकानिज्म होता है तापर देखो यहाँ बहुत इजी अच्छी तो मुझे एतेटा मुझे एक्सप्लेन कली ना ठीक अच्छे जो जगह दरकार पड़ा मुझे एक्सप्लेन कली ना एक्सप्लेन करवा दरकार एकदम सिंपल तुमको टर्म रे देसी है तापर देखिबा हमें मामालियन लंग्स को देखिबा द मल्टी चेम्बर एंड यूजुअली डिवाइड इनटू लोब अबाउट 1 to 6 लोब रे डिवाइड होती जो लंग्सटा है समटाइम राइट लंग हैज मोर लोब देन द लेफ्ट लंग एटा आम प्लस टू रु पढ़ीचु जे राइट लंग रू जो लेफ्ट लंग अच्छे से अधिक मात्रा लोब्स थाए है हेन्स बिकम्स आसिमेट्री है जोटा आम रेबिड हो बा ह्यूमन क्षेत्र में आम मानकर प्लस टू आम अलरेडी पढ़ी सारीचु जे आमर लंग्सटा केमती अच्छी कौ प्रकार से डिवाइड होती पढ़ी सारीचु रेस्पिरेटरी सिस्टम इन मामल स्टार्ट विथ नोज लीडिंग टू द फारिंग्स एंड इज ड्रॉन इनटू द लैरिंग्स एंड देन टू द ट्राचिया एटा भी आम जानीचु आरंभ है नाकरू तापर फारिंग्स तलक आसला लैरिंग्स तापर ट्राचिया आउ सबुठु परे आसला आमर कौन लंग्स है द एपिग्लोटिस इज फाउंड विदिन द लैरिंग्स एटा आम जानीचु जे लैरिंग्स भितर एपिग्लोटिस थाए जे कि जिते खाद्यटा को आम ग्रहण करूँ से एपिग्लोटिस काम है श्वासनली को से क्लोज करदेव जहाँद्वारा कि आम खाद्यटा श्वासनली न जाकि खाद्यनली प्रवेश करें है दिस स्ट्रक्चर प्रिवेंट फूड एंड ड्रिंक पासिंग इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम है व्हेन swallowing है जो आम गिळिबा से है the larynx is pulled up and epiglottis flap
back to the block of entrance of the larynx. The larynx is connected with the trachea of the lung. The trachea contains C-shaped cartilage ring with which prevent the tube collapsing due to change of pressure. It divides into two tubes with smaller diameter called bronchi. The bronchi is further divided into branchioles है एवं branchioles terminate with the alveoli. तो बेसिकली आम जानचु ये आसला आमर कौन यहाँ हूँ लंग्स ये आसला ट्राचिया ट्राचिया रू आसीगला भीतर को पशिला ब्रोंकाई एवं ब्रोंकाई रे सब डिवाइड होना बहुत गुड़ाक कौन जमीना सब तुम कौन अच्छी ये सब एलभिओली मान सब अच्छी यहाँ हूँ आम लंग्स है तो यही प्रकार स्ट्रक्चर थाए तुम जाच है तो तापर देख पाखापाखि एलभिओली अच्छी 100 माइक्रोमीटर माइक्रोन तार डायमीटर अच्छी जोड़ा हूँ आमर कौन साइड जोड़ा साइड हूँ कौन गैसियस एक्सचेंजर साइड आम यहाँ जाचु द पल्मोनारी alveoli thereby the lungs just like the lung of the carnivora of the mammal may have 3 to 500 million pulmonary alveoli. तो एयर केमती फ्लो करे बाई डायरेक्शनल एटा यूनिडायरेक्शनल नुहे मामाल क्षेत्र में एयर फ्लोटा केबे भी यूनिडायरेक्शनल हुए नहीं ये सब बाई डायरेक्शनल होता है तो केमती होता है फ्रॉम नोज एयर पास टू द फारिंग्स देन लैरिंग्स देन ट्राचिया प्राइमरी ब्रोंकाई सेकेंडरी ब्रोंकाई देन टर्सियरी ब्रोंकाई लास्ट को तुम आसला फाइनाली ब्रांचियोल्स एवं सबुठ लास्ट आसला एलभिओली. जदि आम नेक्स्ट देखा एयर एक्सचेंज भाया नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन विथ प्रेशर चेंजिंग ड्यू टू द कंट्राक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राजम. तो डायफ्राजम को जगह थाए मनकर यहाँ हूँ आमर लंग्स यहाँ हूँ आमर लंग्स एमती गला है तो यू कौन हो जगह थाए आमर डायफ्राजम एवं यही जगह आमर कौन अच्छी यही जगह आमर जोटा हूँ एब्डोमेन अच्छी. तो बेसिकाली थोराक्सिक एवं एब्डोमेन को मझे किए एब्डोमेन को मझे किए अलग करता है जोटा हूँ डायफ्राजम है. तो डायफ्राजम कंट्राक्शन और रिलैक्सेशन द्वारा एयर कौन होता है भीतर को प्रवेश करता है बाहर को बाहरी है. आउ इंटरकोस्टल मसल्स भी अच्छी द ग्रेट ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ जोटा ऑक्सीजन इन एल्वेओली एयर इज मोर कार्बन जो ऑक्सीजन विल डिजॉल्व इन द ब्लड जोटा हेनरी लॉज है. हेनरीज को लॉ अनुसार पार्शियल प्रेशर जो एल्वेओलार एयर जदि अधिक थी है ताहले कौन हम जदि अधिक रहा ताले ऑक्सीजन से ब्लड रे डिजॉल्व करें. तापर नेक्स्ट देखिए mammals have a sealed thoracic cavity which is sealed by the diaphragm. In conjunction of the rib, the two sets of the muscles are able to control breathing. Normally the diaphragm relaxed position recoiled, whereas in the contraction position it is pulled downward. This process work is conjunction with the intercostal muscles connected to the rib cage. Contraction of these muscles lift the rib cage, thus aiding in increase in the thoracic volume. Relaxation of the diaphragm compresses the lungs effectively in decrease their volume while the increase the pressure inside them. तो जदि वॉल्यूम टा डिक्रीज है माने कौन हम तार एगेंस्ट कौन हम प्रेशर इंक्रीज हम है. द इंटरकोस्टल मसल्स सिमल्टेनियसली रिलैक्स further decrease the volume of the lungs. This increase pressure force air out of the lung. तो यही जो मेकानिज्म द्वारा कौन हम एयरटा फोर्स हम आउ लंग्स रु बाहर को बाहरी जीव है. कन्वर्सली contraction of the diaphragm increase the volume of the lungs है. decrease the pressure जदि तुम वॉल्यूम इंक्रीज है माने तार एगेंस्ट प्रेशरटा डिक्रीज हम है which create the partial vacuum है. partial vacuum create करबो जहाँ द्वारा कौन हम environmental air then flow its pressure gradient down to fill the lungs. जहाँ जगह environmental air कौन हम संग संग lungs भीतर को प्रवेश करी जीवो है. The ventilation system of the mammals is basically a suction pump. तो यही प्रकार सक्शन पंप द्वारा ही मेकानिज्म द्वारा ही होता है. तब देखो कंपेयर टू द अदर स्पेसीज मामालियन रेस्पिरेशन इज हाईली एफिशिएंट. मन रखी दो बहुत एफिशिएंट. देयर इज ए वेरी लार्ज सरफेस एरिया विदिन द लंग्स
which is maximized by the bubble like structure of the alveoli है The lung also benefit from very thin membrane between the moist layer within the alveoli and the blood. The blood supply to the lungs is very great है The ancient archetype of the lungs was the swim bladder in the fish. The swim bladder is homologous in position and structure with the lungs. तेणु जदि आम ये कंपेयर करवा बर्तमान आसला कंपारेटिव जदि आम मामालियन लंग्स को कंपेयर करवा फिश सहित ताले फिश जो स्विम ब्लाडर जो स्ट्रक्चर और पोजिशन जमती अच्छी आउ ठीक सेमिति ही मामालियन लंग्स रो स्ट्रक्चर और पोजिशन सेम थाए ठीक अच्छे सेमती आउ कौन लिखा आम द lungs of the amphibian is very simple being merely a pair of the cells which with thin wall such a lung of the salamander है of the lungs of the frog and the toad है तो यही प्रकार एम सहित तार कंपेयर कराई द इवोल्यूशन फ्रॉम द लंग ऑफ द सालामांडर थ्रो दैट ऑफ द फ्रॉग अप टू द लंग ऑफ द टोड है कैन बी एक्कम्प्लिश with only a few grade of the compound है the lung of the reptiles is relatively more developed किंतु जब आम ताको जब कंपेयर करबा reptiles रो lung सहित तो reptiles रो lung टा आहुरी डेवलप होता है many small lacuna are separated out inside the lung and the gaseous exchange area is thus enlarged है The cell of the reptiles further develop towards new individuals and further undergo multi-grade compound and following gastrulation है अर्थात कनसीव करवा ठारू यही प्रकार सिस्टम बा डेवलप होता है thereby forming a dense spongy lungs of the birds with million of alveoli. The pulmonary alveoli thereby the lungs just like the lungs of the carnivora of the mammal may have 3 to 500 million pulmonary alveoli. तब देखिए जदि नेक्स्ट adult fishes depend chiefly on the pharyngeal gill for aquatic respiration. However, other device also occurs to supplement of the repressed gill respiration. All such additional respiratory organ other than the gills are known as accessory respiratory organ. These are found mostly in the fishes and the tropical freshwater and hill stream and developed as adaptation to the particular environmental condition. Accessory respiratory organ enable the fish to live in oxygen deficiency water to estivate over prolonged drought in the dry summer, to take short excursion on land and simply to meet extra demand for the oxygen. Some accessory organs observe aquatic respiration while other aerial respiration. तो यही प्रकार रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छी है तो देखा आम जदि आम देखा एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन भितर प्रथम जब स्किन को देखा तो कौ प्रकार कौ मानक रेस्पिरेटरी ऑर्गन रे स्किन थाए बेसिकली आम जानी स्किनटा जमीक कि माछ होता कॉमन इल है एंगुइला हो बा आम जब आउ कुछ जदि एमती देखा कि एम्फिबियन मान स्किन द्वारा से रेस्पिरेशन करते मोड स्कीपर होता फिश लार्वा एंड एम्ब्रियोज कैन बी subcutaneous respiration through skin है स्किन द्वारा से रेस्पिरेशन करते जोटा कौन थाए थिन थाए मॉइस्ट थाए परमिएबल स्किन थाए जहाँद्वारा कि रेस्पिरेशन करने युवाक यही प्रकार कैरेक्टरिस्टिक थाए है जब नेक्स्ट देखा आम बुकोफारेंजियल एपिथेलियम तो बेसिकली इन द मोस्ट ऑफ द फिशेस द एपिथेलियन लाइनिंग ऑफ द बुकल कैविटी ऑफ द फारेंजियल इज यूजुअली हाईली भास्कुलर and permeable to the gaseous in water. But the South American fish जो हमें देखिबा sim branches and the mud skipper can fill their oral and the pharyngeal cavity with the air and thus take oxygen directly from the atmosphere है ना तापर जब हमें गट एपिथेलियम जो देखिबा 3 नंबर है तो देखो in several fishes epithelial lining of certain part of the alimentary canal becomes vascular and modified to serve as respiratory organ.
it may be just behind stomach or intestine or rectum. Fresh air is drawn through the mouth of the anus or anus ହେଲା तापर एटी कौन हो एनस कि माउथ द्वारा से ऑक्सीजन टाक से ग्रहण करती इन दिस फिशेस ऑफ द वॉल ऑफ द गट इज मॉडिफाइड टू परफॉर्म द रेस्पिरेटरी फंक्शन हिसाब से काम करता है तापर देख पेल्विक फिन जदि देखा तो इन अमेरिकन लंग फिश lepidosiren during the breeding time the pelvic fin of the male becomes enlarged and grow filamentous vascular outgrowth which provide fresh oxygen to the guarded egg है तो ये प्रकार से मैंने ग्रहण करते तापर जो 5 नंबर pharyngeal diverticula देखा these are the pair of the simple sac like outgrowth of the pharynx lined by the thickened vascular epithelium and extended above the gill. These are very small in जोड़ा में देखिए periophthalmos small and smooth in the amphibians and somewhat folder in the cana है तो यही प्रकार देखा जाए से the fish have pupally developed जोड़ा gill filament and accessory respiratory sac and chamber serve as the breathe and atmospheric air during the estivation or while coming out of the water for some time से यही प्रकार pharyngeal diverticula देकिना से रेस्पिरेशन ग्रहण माने से रेस्पिरेशन करि थांती तापर जो देखिबा हमें 6 नंबर जे ब्रांचियल डाइवर्टिकुला जो देखिबा तो आउटग्रोथ ऑफ द गिल चैम्बर फ्रॉम द मोर कॉम्प्लिकेटेड एरियल एक्सेसरी रेस्पिरेशन ऑर्गन जोड़ा जो जगह को प्रकार देखा यही प्रकार देखा जाए तो यार होचे 3टा एग्जांपल हमें देखि परबा गोटा होचे हेट्रोप्नेस्टर जोटा होचे हमें देसी जो कोन इंडियन कैट फिश हला हैज पेयर ऑफ लंग्स tubular and dorsally situated sac arising posteriorly from the gill chamber and extending almost up to the tail तो यही प्रकार था तापर जदि अनाबसर देखिबा दिस इंडियन क्लाइंबिंग पर्च हैज 2 spacious suprabranchial cavity in the dorsal outgrowth of 2 gill chamber है तो ये मान को 2टा गिल चैम्बर हम जानलु each cavity contains a special labyrinthine organ formed by the much folder concentric bony plates developed from the first epibranchial bone and the covered with thin mucous membrane है जदि आम नेक्स्ट आम देखा 3 नंबर देखा क्लारियास तो क्लारियास कौन हो द इंडियन कैटफिश क्लारियास हो जोड़ी बाट्रा जस्ट हैज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो ये प्रकार में देखिले है दीज आर द फॉर्म ऑफ 2 मच ब्रांच्ड ट्री लाइक डेंट्रिटिस है और जोड़ा आर्बोरेंस ऑर्गन डेवलप इनसाइड द सुप्रा ब्रांचियल कैविटी है और लास्ट को जो आम देखा 7 नंबर जो देखा एयर ब्लाडर तो एयर ब्लाडर कौन जोटा आम स्विम ब्लाडर ऑफ हायर बोनी फिश इज एसेंशियली एंड हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन बट इन लोअर बोनी फिशेस जो आम देखा द एयर ब्लाडर्स एक्ट लाइक लंग टू ब्रीथ एयर एंड ट्रूली द एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन द वॉल ऑफ द ब्लाडर इज भास्कुलर एंड एस आर्टिकुलेटेड विथ द जोड़ा आर्टिकुलेट होता है क्या सहित एल्वियोली सहित आर्टिकुलेट होता है तो यही प्रकार आमे किछिटा एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन आमे देखा पाइले है तो या सहित तुम यूनिट 2 कंप्लीट हो गला नेक्स्ट क्लास आमे यूनिट 3 स्टार्ट करवा आज जल्दी कि नेक्स्ट क्लास अधिक पढ़ा थैंक यू।